I would like to request everybody to stand up and welcome our esteemed chief guest of the event, Honourable the Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh, Shri N. Kotiswar Singh, sir. Give a huge round of applause for his valuable presence. Thank you so much, sir, for taking your precious time for today's inspiring sessions. All of you, please take your seats. On behalf of Save Youth, Save Future Foundation, I now request Mr. Muhammad Ashraf Malik, sir, Chairman, District Legal Services Authority, Baramulla, Mr. Wajahat Farooq Bhatt, sir. With profound respect and admiration, I humbly invite our Chief Guest, Shri N. Koteshwar Singh, sir, along with other dignitaries, Mr. Muhammad Ashraf Malik, sir, Mr. Minga Sherpa, sir, Mr. Wajahat Farooq Bhatt, sir, to join us in the ceremonial lighting of lamps, symbolizing the enlightenment and harmony that we seek to foster in today's gathering. On behalf of Save Youth, Save Future Foundation, I now request Mr. Muhammad Ashraf Malik, sir, Chairman DLSA Baramulla, Mr. Wajahat Farooq Bhatt, sir, Chairman SYSF, and Mr. Tariq Ahmed Bhatt, sir, CEO AN News, to felicitate and present a token of appreciation to Honourable Chief Guest, the Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh, Shri N. Koteshwar Singh, sir. Ladies and gentlemen, esteemed guests and beloved members of our community, welcome to a day filled with purpose, passion and promise. I would like to introduce myself. My name is Anika Nazir and I am working as a Women's Wing Head of Save Youth, Save Future Foundation, and I am your host for today's event. Today, we gathered under the banner of hope and resilience, guided by the vision of our esteemed NGO Save Youth, Save Future, founded on the principles of empowerment and solidarity. Our organization has been a beacon of light, illuminating the path towards brighter tomorrow. Over the years, Save Youth, Save Future has tirelessly championed for various causes, leaving an indelible mark on fabric of our society. From fostering women's empowerment initiatives to leading the charge against drug addiction, our dedicated team has been at the forefront of change, instilling hope and restoring dignity to countless lives. Our journey doesn't end there. In the face of adversity, our commitment to serving our community only grows stronger.
From the challenging times brought upon by COVID-19 pandemic to promoting cultural harmony by initiating Sufi and sports festivals, we have provided platforms for dialogue and celebration, fostering unity amidst diversity and bridging divides within our beloved Kashmiri community. Today, as we reflect on our past accomplishments and look forward towards the horizon of possibilities, let us reaffirm our commitment to noble cause of uplifting our people and safeguarding our future. Together, hand in hand, let's continue to strive for a world where every individual has the opportunity to thrive and shine. We are delighted that our organization Save Youth, Save Future has been given the opportunity to organize today's program, Yaqeen, Believe in Her, in collaboration with District Legal Services Authority, Baramulla. So without further ado, let's commence today's event. First of all, I would like to invite Chairman District Legal Services Authority, Baramulla, Mr. Mohammad Ashraf Malik sir, to deliver the welcome address and set the tone for today's proceedings. थैंक यू वेरी मच। शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास। शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास रौनकें जितनी हैं औरतों के दम से हैं। Honorable dignitaries, ladies and gentlemen, good morning. Adab, salam, namaste. Warm welcome to all of you. Today we have with us very special person, scholar, eminent judge, and thus we have a reason to rejoice. Verily for this I am in a difficult position to propose or deliver the vote of thanks. But anyway, as the chairman Dalsa, though with a humble knowledge and wisdom, I would try to discharge this obligation or the assignment. However, I may be excused for falling short of words or anything otherwise. My Lord is a man with eagle's eyes, identifying the root cause of the problems with a resolve to redress them, be it the challenges and the problems faced by the downtrodden members of the society, or it is marginalized sections or the litigants in queue for decades to get justice. He is a man possessing dynamic leadership, qualities with exceptional energy, laying a roadmap to achieve the targets, be it on the judicial or administrative side, or as the head of the institution of the judiciary, or as patron-in-chief of J&K Legal Service Authority. A man whose life, career and achievements are a source of inspiration for all of us. We are fortunate to have such leadership. All these qualifications and attributes are of none else than my Lord, Honorable the Chief Justice, Justice N. Kotiswar Singh. I extend warm welcome to your Lordship. At the same time, I find that I must supplement what I have said. जो गुनागुन शख्सियत इनकी है और हर गोशे को कवर करने के लिए I would take aid of noted poet मुनीर नियाजी for that. कि चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, नजर से दिल का गुबार उतरा तो मैंने देखा। मैं नीम शब आसमां की वुसअत को देखता था, मैं नीम शब आसमां की वुसअत को देखता था, जमीन पे वो हुस्न ज़ार उतरा तो मैंने देखा। चमन के बाहर, जब गली के बाहर तमाम मंजर बदल गए थे, गली के बाहर तमाम मंजर बदल गए थे, जो साए कोई यार उतरा तो मैंने देखा। चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, नजर से दिल का गुबार उतरा तो मैंने देखा। I welcome Mr. Minga Shirpa, Deputy Commissioner Baramulla, who has provided full administrative assistance in making this event success.
Simultaneously, I'll also welcome Dr. Zahoor Ahmed Rana, ADC Baramulla, who has always coordinated the affairs between the district judiciary and administration. I extend a warm welcome to Mr. Harminder Singh, Deputy Chief Education Officer. Equally, I would welcome Mr. Feroz, Superintendent of Police Ops, Baramulla, but I must recognize at the same time the assistance rendered and unconditional support delivered by Mr. Amood Ashok Nagpure, always at every and each event, unconditional support and assistance whenever required. I am very grateful to him. I must acknowledge the zeal and ability of Mr. Wajahat Farooq, but Chairman Save Youth Save Foundation in collaborating this event, and I extend a warm welcome to Mr. Wajahat Farooq, Ms. Anika, who is hosting the program also. A special welcome is extended to my registry colleagues in the registry of the Honourable High Court, Mr. M.K. Sharma, Principal Secretary, Honourable the Chief Justice, Mr. Farooq Ahmed Bhatt, Registrar Judicial, and Mr. Abdul Bari, Judicial Registrar, Joint Registrar Judicial, High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, Srinagar Wing. I warmly welcome my colleagues in the district judiciary in Baramulla. Foremost among them is brother Mr. Pawan Kumar Sharma, Additional District Judge, Mr. Manzoor Sen, Sub-Judge, and Mr. Zahoor Ahmed Munsif. I also welcome Mr. Iqbal Ahmed Akhund, Secretary, Legal Service Authority, Baramulla, and his staff, as also the PLVs, who worked very hard in making the arrangements, and their role is in fact commendable. I hereby extend a special welcome to all of you. Warm welcome is extended to the Bar Association Baramulla, led by Advocate Nilofer Masood, President, for being part of this program. I also welcome Mr. Basharat Khalik Bhatt, Vice President, Senior Member of the Bar, Mr. J.N. Ehsan, Advocate, who has been very kind in accepting the invitation and is a participant speaker also in the session. Ms. Sibtan Gilani, Advocate, and Ms. Insha Zargar, Advocate, who are also the speakers in the session, and other advocates who are the part of this program as well. I extend a special welcome also to Mr. Zahoor Ahmed Mir, Chief Legal Aid Defense Counsel. I extend warm and a special welcome to all esteemed speakers in this seminar. Mr. Karamat Qayyum, Chairman BWGA, Ms. Bushra Bedar, Central Administrator, One Stop Center. I also welcome all the office bearers of NGO Save Youth Save Future Foundation for organizing this program and with the collaboration of the Jalsa Baramulla. Mr. Ishfaq Ahmed Bhatt, Secretary Save Youth Save Foundation, and Ms. Anika Nazir, who's hosting also, I've said it, in the program. I find my duty to extend warm welcome to Mr. Naveed, District Information Officer Baramulla, for providing technical support. I also welcome the members of media, both print and electronic. All the court staff headed by Mr. Muhammad Yusuf Shah, Chief Administrative Officer, Mr. Shaukat, Mr. Pandita, who are part of my office and have always been kind in making each and every event, whenever held, success. Their role is always commendable. Lastly, I extend warm welcome to all the participants in the seminar who have come from the different backgrounds, the ICDS, the Social Welfare Department, the ASHA workers from the Medical Department. उनके लिए बहुत खुशामदीद उनके लिए, सबके लिए, तहे दिल से. Lastly, I extend warm welcome to all the participants in the seminar who have come from different backgrounds and all that. As all of you know, that this seminar program has been given the subject title Yaqeen, Believe in Her. The primary intent is to disseminate information and knowledge about the women's empowerment and rights and all that. The women form the half of the human population and are inherently strong, and thus their male counterpart population has to believe and recognize the strength of the women. Somebody has rightly said that behind the success of every man, there is a woman, and behind the success of every woman is the woman herself. This subject title, Yaqeen, is very significant and is self-explanatory
And I would take just a Nasri Nazm of a poet just to explain the yaqeen. कि मुर्दा सनाटों और गुप अंधेरों को चीर कर, मुर्दा सनाटों और गुप अंधेरों को चीर कर ले चला एक हाथ मुझे खुद ही से मिलाने, ले चला एक हाथ मुझे खुद ही से मिलाने, देखकर उसके यकीन पे अपना यकीन, देखकर उसके यकीन पे अपना यकीन लगता है मेरा कोई दोस्त ही रहा होगा, यकीन ही दोस्ती. Therefore, we should make a trust. Before taking leave, I extend warm welcome to your Lordship for having consented to preside over this program. I part with the ardent hope that this event would be a success and every one of us would do whatever little he could do, failing which the generation henceforth, the next, would have to say what Rahat Andori had said, that हमसे पहले भी मुसाफिर कहीं गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कहीं गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. Thank you so much, Mr. Muhammad Ashraf Malik sir, for addressing the gathering. Yaqeen, believe in her, is dedicated to empowerment of women. So begin with the voice of women. I welcome Miss Nilofer Masood, President Bar Association Baramulla, and she will share her insights and perspectives with us. वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोजे दरो. शर्फ में बढ़ के सुरैया से मुक्ते खाक साकी कि हर शर्फ है इसी दुर्ज का दुरे मखतूम. Honourable Chief Guest, Mr. Justice and Kotiswar Singh, the Chief Justice of High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh. Honourable Principal Secretary to His Lordship, the Chief Justice, Mr. M.K. Sharma. Honourable Registrar Judicial, Mr. Farooq Ahmed Bhatt. Honourable Registrar, Mr. Abdul Bari. Honourable Chairman Dalsa, Mr. Muhammad Ashraf Malik. Honourable Additional District and Sessions Judge Baramulla, Mr. Pawan Kumar Sharma. Honourable Sub-Judge, Mr. Manzoor Hussain. Honourable Secretary Dalsa, Mr. Zuhur Ahmed Ganai. Honourable Deputy Commissioner Baramulla, Mr. Minga Sherpa. Honourable ADC Baramulla, Mr. Zuhur Ahmed Rana. Respected Chairman, Save Youth Save Foundation, Future Foundation, Mr. Wajahat Farooq Bhatt. Respected ASP Headquarter, Mr. Farooq Yahya. Respected Chairman Journalist Association, Mr. Karamat Qayyum. Respected executive members of the Bar Association Baramulla. We have here legal lawyers from the legal aid, Mr. Zuhur, Mr. Ishfaq, Ruqayya. I have my executive team also here, which includes Vice President of Bar Association Baramulla, Mr. Basharat Khalik Bhatt. We have with us Advocate Siftain, Advocate Insha, all the dignitaries, all the dice in charge who are sitting over here on the podium, and all the respected invitees. Assalamu alaikum, very good morning to all of you. Adab. The day could not be so wonderful, and it's really very wonderful because when the women empowerment is being presided by the august male counterparts, it really gives us immense pleasure. August guests, colleagues, fellow advocates of women's rights, it gives me immense pleasure and feel honored to stand before you today to speak about the essence of women empowerment. Women empowerment is not just a concept. It is a movement, it is a revolution that strives hard to break the shackles of patriarchy and inequality that have held women back from centuries.
August gathering. The path to women empowerment and gender equality in India is a journey of resilience, struggle, and hope. While there have been significant achievements, no doubt about that, in doing away gender inequality, the journey towards dismantling deeply ingrained patriarchy and achieving women empowerment and gender parity in India in a true sense remains arduous. August gathering. Women empowerment broadly, if we refer to the process, is that by which a woman gains power and controls their own lives and acquires the ability to make strategic change and choice. It involves promoting a sense of self-worth among women, along with their ability to determine their own choices and their right to influence social change for themselves and others. August gathering, women empowerment has 3 dimensions. It speaks about socio-cultural empowerment, it speaks about economical empowerment, it also speaks about political empowerment. If we refer to social cultural empowerment, it means enhancing women's capacity and authority to make choices and transform these choices into a desired action and outcome within the context of their society and culture. Talking about economic empowerment, it refers to the process of providing women the means to achieve economic independence and strength, as well as ensuring their ability to participate fully and freely in the economy. Now, talking about political empowerment, it refers involving, enhancing women's ability to participate in political processes, influence public policies and decision-making, and gain representation in the political and governance structures at all levels. Gender equality is a term which is usually confused. It is fact. It never refers that we never mean that we should stand on the same podium with the male. It in fact refers to equal rights, responsibilities and opportunities of women and men, boys and girls. It does not mean that women and men will become same. Rather, it seeks to do away with the gender inequality by stipulating that the rights, responsibilities and opportunities for men and women will not depend on their gender. Gender equality is a human issue which needs to be addressed, a precondition for sustainable people-centric development. The present status of gender disparity or gender inequality in our country can be imagined by the Gender Gap Report of 2023, when it was found that our country, India, ranks 127 out of 146 countries in terms of gender parity. As per NCRB report of the 2021, I don't talk about 22 or 23 or 24, it's of 22-21, when we have 4,000 cases which involves the violence against the females. Representation of women in the parliament, it is approximately 15%, while as in the state assemblies it is only 14%. Women constitute 50% of the population. Leaving behind them is not an option if the nation wants to become Viksit Bharat by 2047. No doubt, Constitution provides several provisions that support women empowerment, which includes Article 14, it includes Article 15, Clause 1, 15, Clause 3, 16, 21, 23, 39, 42, 44, 51, 243A, 243DT. Recently, Women Reservation Bill has been passed in the year 2023 in order to encourage the women voice and also encouraging their participation in the decision making. Our government has launched so many programs with respect to encouraging the women, our female folk, which includes mostly, I'll be enumerating a few of them here: National Policy for Empowerment of Women, National Mission for Empowerment of Women,
Beti Bachao, Beti Padhao, National Scheme of Incentives to Girls of Higher Secondary Education, PMSSY, OSC, Nirbhaya Fund, etc. Achieving gender equality and women empowerment in women in India requires comprehensive strategy. To achieve this goal, some measures must be taken, which includes, number one, changing social attitude. It's very important. Unless and until we don't change the attitude of the society, there will be no perfect women empowerment. Providing better education opportunities, ensuring women's safety, providing market-relevant skill, enhancing access to credit, promoting political participation, offering leadership development programs. As our country strives, as I have already said, the vision of Viksit Bharat at the rate of 2047, individuals should put their collective efforts into fostering a society where every woman has opportunity to strive. August gathering. I feel it's crucial for all of us to understand that empowering women is not just a moral imperative. It is an economic necessity, a social responsibility, and a path to a more just and equitable society. We shall see, it is certain that we shall see a world where women are empowered, where their voices are heard and their contributions are valued. Let's join hands in this noble cause of women empowerment. Let us challenge the status quo, dismantle the barriers, and pave the way for a future where every woman fulfills her potential, where every girl can dream without limits. Thank you very much. मैं तमाम मुकर्रर हजरात से गुजारिश करता हूं कि वो वक्त का ख्याल रखें, ताकि हमारा मकसद ये है कि सब अच्छी बातें हो रही हैं, अक्ल की बातें हो रही हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि जनाब जो सदर मोहतरम हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उनको सुनना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ये नहीं कि बाकी गैर ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब हम वही चाहत रखते हैं और जितना कम हो हाइल होना उतना कम उसको रखिएगा। बहुत मुजबाना गुजारिश है, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Ms. Nilofar Masood. Our next speaker is Mr. Karamat Qayyum, Chairman, Baramulla Working Journalist Association, and a distinguished member of civil society. Let's hear his thoughts on today's theme. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औरत कभी मरियम, कभी हवा, कभी जहरा। औरत कभी मरियम, कभी हवा, कभी जहरा। औरत ने हर एक दौर में कौमों को संवारा है। वाजिबुल एहतराम and Kotiswar Ji, Honourable Chief Justice, Jammu Kashmir Ladakh High Court, Principal District and Sessions Judge, Baramulla, Chairman Dalsa, Mohtaram Mohammad Ashraf Malik Sahab, Deputy Commissioner Baramulla, ASP Baramulla, Judicial Afsaran Sahiban, Bar Association से वाबस्ता वकला साहिबान, NGO से वाबस्ता नुमाइंदगान, चेयरमैन सेव यूथ सेव फ्यूचर वजाहत फारूक साहब, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। With the permission of chair, I will choose the language which suits the audience, because I have the experience. There was a seminar on
the Right to Information Act, every speaker came and spoke in English language. In last, when there was a question-answer session, we could understand that nobody has understood what was going on in the podium. So I will choose the language which suits the audience with the permission of the chair. ये एजाज और फख्र की बात है कि आज सेव यूथ सेव फ्यूचर और जलसा के इश्तराक से एक ऐसे मौजू को चुना गया है जिसके बगैर हम सब नामुकम्मल हैं। इसका नाम जो यकीन है, बिलीव इन हर। इसके लिए मैं दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया इस पर बात करने का। बात शुरू करें, घर में आप मां की हैसियत से इस औरत की कंट्रीब्यूशन को आप तस्लीम करते हैं। घर में आप बहिस्सत बहन इसकी काबिलियत और इसकी खूबियों को आप तस्लीम करते हैं। घर में आप बहिस्सत खानदारी के फराइज जब ये अंजाम देती है तो आप एक्नॉलेज करते हैं इसकी खुसूसियात और इसकी क्वालिटीज को। लेकिन जब ये स्टेप आउट करती है दरवाजे से बाहर, उस वक्त हम सब लोग जेलस फील करते हैं। इस सोच को बदलना होगा। इस सोच को बदलने में मीडिया का रोल है। एक दौर था जब पूरी दुनिया में दो खवातीन का नाम लिया जाता था, मार्गरेट थैचर एंड मिसेस इंदिरा गांधी। दीज वर द टू लेडीज हु वर रिप्रेजेंटिंग द होल वर्ल्ड। लेकिन आज वो दौर नहीं है। औरत ने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया है, चाहे वो कानून का शोबा हो, चाहे वो तिब का शोबा हो, चाहे वो सपोर्ट्स का शोबा हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज का शोबा हो। गर्ज की जिंदगी के हर शोबे में इसने अपना एक लोहा मनवाया है। इस हकीकत को हमें तस्लीम करना होगा। जो दकियानुसी एक सोच था, इसको घर की चार दीवारी में ही कैद रखा जाए, इस सोच को बदलना होगा। अगर आप एक सेहतमंद समाज की तामीर चाहते हैं, अगर आप एक मुस्तहकम समाज चाहते हैं, तो हमें इस औरत के इस टैलेंट को दरवाजे के बाहर भी रिकॉग्नाइज करना होगा। मुझे इस चीज का जबरदस्त एहसास है, यहां पर और भी मुकर्रीन है, लेकिन मैं कोशिश करूं मुख्तसर से मैं अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूं। जिस दौर में हम रह रहे हैं, इसमें एक नया सैलाब दाखिल हुआ जिसने जिंदगी के हर एक शोबे को मुतासिर किया, और उसने औरत को भी मुतासिर, और सबसे ज्यादा अगर मुतासिर है तो वो औरत है, वो रहा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के चुंगल से इसको निकाल के इसको पर देना, ये मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है और जिम्मेदार मीडिया का काम है। औरत की खूबियों को, अचीवमेंट्स को उजागर करना, नेगेटिव पहलुओं को डाइल्यूट करके रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर मैं कहीं पर कलम उठाता हूं, मैं किसी की बहन के खिलाफ लिखता हूं, किसी की मां के खिलाफ लिखता हूं, किसी की चादर की चार दीवारी के अंदर झांकने की कोशिश करता हूं, मुझे यह एहसास होना चाहिए और मुझे ये मानकर चलना चाहिए कि मेरी भी बेटी है, मेरी भी मां है, मेरी भी बहन है। मुझे उसकी जहनी,
तकलीफ का अंदाजा करना होगा। ये किस कर्म से गुजरेगी अगर इसकी नेगेटिविटी को या इसकी प्राइवेसी को मैं झांकने की कोशिश करूंगा या इसमें मुदाखलत करने की कोशिश करूंगा। मैं इस चीज का कायल हूं कि सोशल मीडिया अब एक ऐसा सफेद हाथी बन गया है, इसको कोई भी लगाम नहीं दे सकता है। अगरचे कानून और एक्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन इसको लगाम देना मुश्किल है, क्योंकि इसको अब जिस वक्त खुला छोड़ा गया उस वक्त इसको अगर कतगल लगाई जाती, इसका एक मियार मुकर्रर किया जाता, शायद आज हम इन हालात से नहीं गुजरते। लेकिन उस वक्त इसको छोड़ दिया गया खुला, और आज सब मसले इक़्तिदार में बैठे लोग या पॉलिसी मेकर्स जो हैं या खुद बजाय खुद जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आज वो भी परेशान है कि सफेद हाथी को कैसे कंट्रोल किया जाए। मेरी आप खवातीन से गुजारिश है, अगर कहीं आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी को किसी सोशल मीडिया चैनल ने, प्लेटफॉर्म ने, किसी इंडिविजुअल फर्द ने मुतासिर करने की कोशिश की, आपको अपनी आवाज उठानी होगी, आपको पुलिस में जाना होगा, आपको कोर्ट में जाना होगा। जब तक न आप अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद तलाश करेंगे, तब तक आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यहां नहीं आएगा। हर जगह पर आपका तहफ़्फ़ुज़ मयस्सर है, लेकिन शर्त है कि आप एक स्टेप आगे चलें। यहां कुछ साल पहले डलसा का तस्वर ही नहीं था। औरतें कोर्ट में जाने से कतरा रही थी, या तो उनकी माली हालत ऐसी नहीं होती थी कि वो केस को फाइट आउट करते। लेकिन कुछ साल से डलसा ने जब से ऑन ग्राउंड जो आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश की, अब एक सहारा लगता है कि अगर मैं कोर्ट में जाऊं, वहां एक फोरम है जो मेरी बात सुनेगा, जो मुझको फैसिलिटेट करेगा, मुझे वहां पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला वहां कोर्ट में महसूस नहीं करूंगी, मेरे साथ एक टीम होगी जो मुझे सपोर्ट वहां करेगी। उसके लिए मैंने कुछ केसेस पिछले 1-2 महीने से हमने देखा, कुछ केस में फैसले भी आए, कुछ केस में कंप्रोमाइज भी हुए, लेकिन बड़ा हौसला अफजा है कि जिस अंदाज से डलसा काम कर रही है, जिस अंदाज से डलसा आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कि ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए कि लोगों तक बात पहुंचे कि कानून में क्या क्या तहफुजात हैं, खासकर औरतों के मामले में। आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया ने बवाल मचा दिया है, लेकिन औरतों को ये पता ही नहीं कि हमारे हुकूक क्या है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि डलसा जिस तरह ये प्रोग्राम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फंड्स उनको मयसर किए जाए, ताकि आम ग्रास रूट लेवल पे ये अपनी बात को पहुंचा सके और लोगों को फायदा पहुंच सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूं। अगर कहीं पे हमसे सिन्फ़ नाजुक के तकद्दुस में कहीं हमसे कोताही हुई हो या ज्यादती हुई हो, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं। फेसबुक पे गालियां मत दीजिएगा, यहां पर ही बात कीजिएगा। वस्सलाम। Thank you so much, Mr. Karamat Qayyum sir. Now I invite Ms. Sibitain Gilani, Advocate, District Court, Baramulla, to share her valuable perspective with us. Over to you, ma'am. Honourable Chief Guest, the Justice, High Court, Jammu and Kashmir, Ladakh, as we have been entangled into the shackles of time, to cut it short, all the other dignitaries present here, all the participants, everybody, media person, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to all of you. We are here with a topic, I say this is women empowerment. Let us see first what this empowerment is. Empowerment is a process by which an individual gains the liberty to do what the individual wants to do and wants to achieve. With the help of, rather with the blessings of various laws, acts and ordinances,
we have been doing our level best to save women like from domestic violence. Rather, we make the programs here by which we try to make them aware that what their rights are. They can seek maintenance if at all they are being deserted by father, by husband, or a mother is deserted by son. We have been doing this, or we have been awareing mass population of women that we do have the laws wherein you will be, we ensure your safety, maybe that at your workplaces, on roads, in colleges, wherever you are, maybe on roads like eve teasing. We have all the laws, you have been protected by laws, provided it was well said by Mr. Karamat Qayyum that जब आपको अपने हकूक का पता होगा तभी आप ये चीज समझ जाएंगी कि कहाँ पे आपकी हकूक की पामाली हो रही है. Having said all the acts and laws by which we can empower women, wherein he can speak up, जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती है, कहाँ से उसको रिड्रेसल मिल सकता है. एक अफसोस की बात ये है कि ये तो तब होगा जब वो इस दुनिया में आ जाती है. आज की डेट में भी जब हमारा इसका मोटिव यकीन हो चला है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये औरत जो है उम्मीद के दायरे से बाहर आ गई है. यकीनन शायद वो एम्पावर हो रही है, बिकॉज इट इज शी इज शोइंग इट ऑन द फेस ऑफ इट इन एवरी फील्ड. शी इज आउटशाइनिंग द मेल, शी इज आउटशाइनिंग, शी इज डूइंग सो वेल इन एवरी फील्ड वेर एवर शी गो. बट आज की डेट में भी जब हम देखते हैं, जब हम सर्वेज देखते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड क्यों होता है? When a female is inside the womb of a mother, तो उसको क्यों मारते हैं? बाहर जब वो आती है तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम तो हमने किया है, मगर क्यों आज भी उसके अपने वालिदैन उसको मार देते हैं? अगर इस चीज पे हम थोड़ा सा अवेयर करें लोगों को, अगर उनको ये लगे कि नहीं अब बेटी पैदा होना कोई सवाल नहीं है, अगर उस मामले में हमें कोई सक्सेस मिलती है तो दैट विल बी द रियल सक्सेस. Coming to the empowerment, there are various types of empowerment like social empowerment, economical empowerment. Women should feel, yes, she belongs somewhere, she exists, she has her own identity, she is a contributor like other males. And one of the crucial empowerment is educational empowerment. There are so many schemes wherein she has been provided with the opportunities. She can get educated by various schemes. But the most important thing regarding this education is her education, not only her. If it is a son, what I want to say is children, whether it's a male or female, the basic education which children get from home, that's more important. If a mother raises a son well, automatically daughters will be empowered. I believe in this. If a son is raised in a right perspective, if a mother does not tell her son don't cry like a girl, it automatically this girl feels a kind of low confidence. Probably it's for me. No, it's okay if a man cries, it's okay. He possesses a heart, he has emotions. It's absolutely okay to cry. We are human beings. It's not only a woman who should cry, and you should not say this, क्या औरत की तरह रो रहा है? तो ये जो टैबूज होते हैं, ये चीजें अगर वो कहते हैं to curb the evil from the bud, इसमें इन चीजों से रिजल्ट्स आ जाते हैं. अगर आप अपने बेटे को अपनी बहन की इज्जत करना सिखाते हैं, बजाय इसके कि उसकी बहन को अपने भाई के सामने आप डांटते हैं ये बोल के कि तुमने इसके कपड़े क्यों नहीं धोए, तुमने इसकी बुक्स ठीक से क्यों नहीं रखी, तुमने इसका चाय का कप का ये उठाया क्यों नहीं, ये तो कब का निकला था. नहीं, बोथ ऑफ देम शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड, हेल्प ईच अदर. एग्जाम है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करो, और ताकि आपको पढ़ाई करने का भी टाइम मिलेगा. जब ऐसा बेटा पैदा होता है तो उसको कल को इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो अपनी बीवी का भी हाथ बटाएगा. उसको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मैं मरीज गुलाम हो गया अपनी बीवी का. सो गर्ज में
कहने का यही है कि एजुकेशन वाला जो पहलू है इट्स वेरी क्रूशियल एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हाउस। और बाकी ये चीजें जितने भी सेमिनार्स जो हम अवेयर करते हैं लोगों का, it has its own benefits, but the prime and basic thing is education at home. Women here, if you are good educators at home, empowerment of women is for sure. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Sibritain Gilani. I would like to highlight a point from what she said कि अगर कोई मर्द अपने डेली शोर्स में हेल्प करता है अपने घर वालों की, तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि उसकी जो है आइडेंटिटी जो है कम हो गई। वी शुड नॉर्मलाइज इन आवर सोसाइटी दैट डूइंग डेली लाइफ शो इज इंडिविजुअल एबिलिटी एंड नॉट जेंडर वर्क। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस बुशरा बेदर, वन स्टॉप सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर. शी विल address us with her opinion. SCDS Chief Guest, Honourable Shri and kotiswar Singh, Chief Justice of High Court, J&K Ladakh, esteemed Shri Mingha Silpa, District Development Commissioner Baramulla, and other dignitaries and audience, good afternoon to all of you. Assalamu alaikum. मैं बेटी हूँ तो एक रहमत हूँ, मैं बेटी हूँ तो एक रहमत हूँ, बहन हूँ तो एक दुआ हूँ, बीवी हूँ तो एक रूह का सुकून हूँ, माँ हूँ तो एक जन्नत हूँ, दोस्त हूँ तो एक राजदार हूँ, क्योंकि मैं रहमत बेमिसाल हूँ। जहाँ हम एक तरफ खवातीन को बाइख्तियार करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम औरतों के साथ तशद्दुद खत्म करने की बात करें तो वो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। चूंकि मैं इसी फील्ड से हूँ, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है इन चीजों का कि औरत के साथ कहाँ कहाँ तशद्दुद होता है, किस किस्म का तशद्दुद होता है। औरत के साथ तशद्दुद कहीं भी होता है, चाहे काम करने वाली जगह हो, घर हो, मायका हो, ससुराल हो, गाड़ी हो, रास्ते पर हो, किसी भी किस्म का तशद्दुद है। सिर्फ मारपीट एक तशद्दुद नहीं है, जहनी दबाव भी हो सकता है, माली तशद्दुद भी हो सकता है। जहां अगर हम बात करेंगे सखी वन स्टॉप सेंटर की, जहां पे केसेस रिपोर्ट होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, अगर हम एज ग्रुप्स की बात करेंगे, 18 साल से लेके 35 साल तक जो उम्र है, उसमें हमारे पास 225 केसेस अभी तक रजिस्टर हुए हैं। मुझे लगता है कि अलग अलग एज ग्रुप्स के साथ अलग अलग किस्म का तशद्दुद होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2 साल से। 18 साल से 35 साल की उम्र तक जो तशद्दुद होता है, वहां शादीशुदा खवातीन भी हैं और कुंवारी लड़कियां भी हैं। कुंवारी लड़कियों की अगर बात करेंगे तो वहां ब्लैकमेलिंग के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, और अगर हम शादीशुदा औरतों की बात करेंगे तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिससे मेंटल टॉर्चर होता है खवातीन को। शादी की उम्र है 18 से 35 साल तक की, शादी होते ही कुछ साल तक तो रिश्ता ठीक रहता है, लेकिन कुछ साल के बाद तशद्दुद होना शुरू होता है अलग अलग रीजंस पे। शक्ल अच्छी नहीं है, शादी से पहले तो देख भी लिया होता है, लेकिन शादी के बाद फिर भी वही चीजें बोलनी है, शक्ल ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता था इसका नेचर ऐसा है, मुझे नहीं पता था। औरत आएगी तो वो यही बात करती है, अब ये डाउरी डिमांड करते हैं, पहले कुछ नहीं मांगा, बोला हमें कुछ नहीं चाहिए और अब मांग रहे हैं। गोया हमें जो लगा इन सारी खवातीन के साथ बात करके, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, और जहां हम केसेस के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराते हैं कपल्स का, कॉम्प्रोमाइज शायद इसलिए होता है क्योंकि हम दोनों तरफ से बात सुनते हैं। मुझे लगता है मेल्स को लगता है औरतों के लिए जो कानून बने हैं तो हर जगह शायद औरत का ही सुनते हैं, लेकिन हमारे दफ्तर में हम लोग दोनों का सुनते हैं। दोनों का नहीं सुनेंगे तो शायद उन दोनों के बीच में सुलह नहीं होगी। दोनों का सुनना बहुत जरूरी है, तभी तो हम लोग कामयाब होते हैं उनको एक करने में। अगर हम एज ग्रुप की बात करेंगे 35 से लेकर 60 साल की उम्र तक, मुझे लगता है इस एज ग्रुप में औरत के साथ तशद्दुद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर तशद्दुद इसमें जो होता है वो है मर्दों का आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप्स। घर में औरत है, शादी है, बच्चे हो गए, बच्चे स्कूल जाने लगे, कुछ के कॉलेज भी जाने लगे, फिर भी उनको बाहर एक रिश्ता रखना है, और वही घर पे मोबाइल फोन से, इसी की वजह से ऑब्वियसली उसकी बीवी को भी पता चल जाता है कि
जो मेरा हस्बैंड है उसका बाहर कोई रिश्ता चल रहा है और उसी की वजह से वो औरत मेंटल टॉर्चर का शिकार होती है, जिससे वो नहीं उबर पाती हैं। और अगर इसकी बात करेंगे, जो ये एज ग्रुप है, इसमें जो बच्चों का मेंटल हेल्थ है उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है कि बच्चे किस चीज से गुजरते हैं जब घर पे एक वायलेंस वाला माहौल हो, जब हस्बैंड एंड वाइफ आपस में गाली गलौज करते हैं। अब तो ये बहुत नॉर्मल सी बातें हो गई है हमारे घरों में। जब गाली गलौज की बात होती है तो बच्चों पे क्या असर पड़ता है? एक तो है कि बच्चा सीख रहा है, लेकिन दूसरी बात यह है कि आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। वो लोग बाहर निकलने से फिर शर्माते हैं। हम बाहर निकलेंगे, क्या पता हमारा नेबर ये बोल दे कि आपके घर में तो रात को शोर था, शोर क्यों था? उसके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो ये नहीं बता सकता कि मेरे पेरेंट्स आपस में लड़ रहे थे। तो बेहतर है कि आप उन बच्चों का ध्यान रखें। हर एक घर में झगड़ा होता है छोटी छोटी बातों पे, पर बेहतर है कि आप अपने लेवल पे उसको ठीक करें। बच्चों के सामने गाली गलौच ना करें और बच्चों के सामने एक दूसरे को इज्जत करें, ताकि वो भी वही चीजें सीखें। दूसरी चीज है मेंटेनेंस की। हम लोग बहुत सारे केसेस जिनको हम फ्री लीगल एड देते हैं थ्रू डालसा, मजबूर हो जाते हैं क्योंकि मर्द जो है औरत को महाना खर्चा देने से मना करते हैं। जायज अखराजात कुछ केसेस में पूरे होते हैं, जहां नहीं होते हैं वहां हम लोग महाना खर्चा मांग लेते हैं और उनको लगता है कि हम अपनी बीवियों को तनख्वाह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और एक बात है जहां हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं इस एज ग्रुप में ज्यादा। और अगर हम 60 साल और 60 साल के ऊपर की बात करेंगे, हमारे पास 10 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं जिनकी एज लगभग 70-80 साल की है। ऐसी खवातीन भी हमारे पास आए हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पे ही उनकी बात है कि अब तो एज हो गई, बच्चे भी सेटल हो गए, लेकिन अब तुम जी मायके वालों से हिस्सा लो। मायके वाले नहीं देंगे तो फिर उसको टॉर्चर होना शुरू हो जाता है। तब तक वापस नहीं आना जब तक अपना हिस्सा नहीं लेके आओगी। वक्त की कमी है तो मैं यहाँ एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगी। शायद जमाना बना था ना मेरे लिए, शायद जमाना बना था ना मेरे लिए, मैंने फिर भी सवार सवार के एक उम्र गुजार दी। कभी बेटी बनकर, कभी बीवी बनकर, कभी माँ और कभी बहू बनकर, समाज के हर एक उधार के बदले हर एक की किस्मत सुधार दी। शुक्रिया। Thank you so much, Ms. Bushra Bedar, for highlighting the potential social issues regarding women. Our next speaker is Advocate Jian Essen, sir, Senior Bar Association member. Let's hear his thoughts on empowering women through legal avenues. Over to you, sir. Your Lordship, Chief Justice, Jammu Kashmir and Ladakh. Honourable Principal District Session Judge Baramulla, all administrative distinguished guests from Baramulla and judicial officers, members of the bar, sisters and daughters, Assalamu alaikum. मेरा मानना है कि फूलों की तारीफ किए बगैर अगर गुलशन की तारीफ की जाए तो वो बखीली है, वो कोई फराख दिली नहीं है। तो जिस औरत के बारे में इतना कहा गया है और जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, तो उनकी तारीफ में सिर्फ 1.5 मिनट या 2 मिनट का टाइम लेना चाहता हूँ। एक शायर के जरिए मैं कहूँगा, औरत के बारे में कहते हैं कि जाने कब तक तुझे अल्लाह ने शायर बनकर, मैं समअप करना, कब तक तुझे अल्लाह ने शायर बनकर शायर नाजुक की तरह जहन में सोचा होगा, तब कहीं दहर के दीवाने मुसविर में तुझे गुनगुनाते हुए गाते हुए लिखा होगा। ये जो मार कुटाई और मारपीट की यहाँ अभी बातें हो रही थी, औरत दुनिया में मार खाने के लिए पैदा नहीं हुई थी। मैं इस तस्वुर के खिलाफ हूँ कि जिस एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, मैं कहता हूं कि औरत तो बाय बर्थ एम्पावर्ड, हमारी माँ बहन बेटी, इसको एम्पावर करने की जरूरत।
को कहते हैं हो जा, तो वो चीज हो जाती है। तो औरत के बारे में टाइम देना। अपने घर में कोई मर्द ये तारीफ नहीं कर सकता। तो चलिए, अल्लाह का करम है कि आपकी वसातत से, आपकी वजह से आज हमें ये मौका मिला कि हम अपनी बेटियों और अपनी बहनों के मुतल्लिक़ कुछ कहें। मैं तो कहता हूँ दुनिया की बद तहजीब और बगैर तहजीब की सोसाइटी वो है जिसमें औरतों की कोई इज्जत न हो। आप देखिए, जहाँ तक मैं अपना मौजू बुला मैं मौजू से भटक नहीं गया। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, टाइम बहुत मुख्तसर है, पहले से इन्होंने और मेरे आने से पहले ही बेल बजा दी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो औरत की एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, उनको एम्पावर करने की जरूरत नहीं, आप उनको उनका खोया हुआ मुकाम दीजिए। आप उनको उनकी जिस इज्जत के लायक उनको अल्लाह ने बनाकर भेजा था, वो इज्जत हमने साबित कर दी। हमको मर्दाना बर्तरी का एहसास है, उस एहसास ने हमको रुस्वा कर दिया है दुनिया में। लेकिन जिस वक्त हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, आपको याद रखना चाहिए हम पर एक जिम्मेदारी है। हम इन सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन अलहदा करके ये नहीं कह सकते। वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट है औरत की आज़ादी का, क्या वो आज़ादी चाहती हैं? ईस्ट में दूसरा कॉन्सेप्ट है औरतों की आज़ादी का। आपको देखना है कि काबिल तस्लीम, काबिल कबूल कौन सी आज़ादी है। हमें ये देखना है कि अगर आपकी आज़ादी मजहबी रिवायात के साथ, उस तकद्दुस के साथ जुड़ी नहीं है, ये आज़ादी नहीं है, ये तो तबाही है। इन मॉर्निंग वी फील, घर में होते हैं हम, हवा चलती है जिसको बाजी सबा कहते हैं, वो किसी को कुछ नहीं हिलाती है। हाँ, एक बात है, चलो दीवार के पर्दों में सरसराहट सी होती है, आप महसूस करें कि पर्दे हिल रहे हैं, इतनी खुशगवार हवा होती है। वो जब गुलिस्तान से गुजरती है कि तमाम गुलिस्तान और उन फूलों की महक लेकर वो अपने एनवायरनमेंट को और अपने गिरदोपेश को महक आती है। लेकिन अगर वही हवा सरकशी पे आ जाए, बगावत पे आ जाए, सारे गुलिस्तान का सत्यानाश कर सकती है वो। और हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या बनना है। हमें बाजी सबा बनना है कि वो हवा का तूफान बनना है, गर्द गुबार का वो तूफान बनना है जिससे तबाहियां आती हैं, कैटास्ट्रॉफ आते हैं, जिससे डिस्ट्रक्शन आती है। आपको वही आज़ादी तस्लीम करनी चाहिए जो आज़ादी आपके धर्म से निकली है। कोई भी दुनिया का धर्म औरत को वो आज़ादी नहीं देना चाहता जो तबाही की बाइस बने। मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी की है, आप इस्लाम का मुताला करें, हिंदू मत का मुताला करें, क्रिश्चियनिटी का करें, बुद्धिज्म का मुताला करें, सिखिज्म का मुताला करें, हर मजहब औरत को पर्दे में रहने की, अपनी ताकत इस्तेमाल करने की एक विकार के साथ, एक इज्जत के साथ। ऐसा नहीं है कि औरत को छोड़ दिया जाए। जैसे 3-4 महीने पहले हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक जमात आई थी और वो स्लोगन्स दे रहे थे, हम मर्द होकर शर्मिंदा हो रहे थे उनकी बातें सुनने में। वो हमारा जिस्म, हमारी मर्जी, इस किस्म के स्लोगन। क्या ये आज़ादी है? ये आपकी आज़ादी नहीं, ये आपकी बर्बादी का पेशमा है, आपकी बर्बादी का ऐलान है। आप सब औरतें अपने आप को ये अपने जहन में रखिए, आपको एम्पावरमेंट चाहिए। वो एम्पावरमेंट आपकी इज्जत में मुनहसर है। जब तक आपकी इज्जत है, जब तक आप अपने हुदूद में कैद हैं, तब तक आप बाइज्जत हैं। जिस दिन आप इन हुदूद को फलांग कर, अपनी दहलीज को फलांग कर बाहर आ जाएंगी,
बाहर आने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई काम धंधा नहीं करेंगे। दहलीज लांघने के कुछ और मानी होते हैं। अगर आप अपने हुदूद से बाहर हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। सारी दुनिया की ताकतें आपको इज्जत नहीं दे सकती हैं। जो इज्जत आपको अल्लाह ने दी है, जो इज्जत आपको भगवान ने दी है, जो इज्जत आपको समाज ने दी है, वही इज्जत अगर हम भी आपकी करने लगे, मुझे यकीन है आपको एम्पावर मांगने की कोई जरूरत नहीं, एम्पावरमेंट की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने बारे में इतना ही कहूँगा जाते जाते कि ये मेरा बचपन है, दिल में जो आता है कहता हूँ, तभी ये मसला की जद में आएगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता। Thank you so much, Advocate J&K sir, for such a thought-provoking speech. I now request Advocate Insha Zarga to come forward and share her thoughts. Today I have congregated in a very festive mood in front of this elite panel of guests. It's not a mere gathering, but an expression of happiness and gratitude for all to be with you. I welcome all the dignitaries who have joined us today. It's an honor and proud to stand before you to discuss a topic that is close to my heart, that is women empowerment. Being a legal practitioner, I will particularly emphasize on women in legal profession. If we go back by 20-30 years, we find few singular instances of successful lady lawyers in Baramulla court. I think we will all agree on the fact that legal profession has historically been male-dominated. However, the presence of several lady lawyers in this hall, including the bar president herself, suggests the winds of change are blowing. And we are witnessing a transformative shift towards gender inclusivity and empowerment. Today, more than ever, we recognize the invaluable contributions of women in law, be it as judges or lawyers. Empowering and believing in women is not merely a matter of representation. It's about harnessing the diverse perspectives, talents, and insights that women bring to the table. It's about fostering an environment where every individual, regardless of gender, is given opportunities to thrive and excel. While we see the progress, we must also acknowledge the challenges that women in the legal profession continue to face. From systemic biases to unequal access to resources and opportunities, the road to empowerment is not without its hurdle. But it fills my heart with happiness when I see my fellow female colleagues struggling and striving to overcome these barriers that tend to slow them down. Our bar president, Advocate Nilofer Ma'am, is a stark example of our collective success. We all need to take inspiration from her. We should work together to dismantle systemic barriers, to foster mentorship programs, and to create a culture of support and empowerment for women in the legal profession. It's time we trust women and allow her to play equal role in the legal landscape of country. I urge all aspiring women lawyers and judges to embrace their potential, to shatter glass ceilings, and to never be cowed down in the pursuit of justice. You must know and believe that your voices matter. Your perspectives are invaluable, and your presence strengthens the fabric of our legal system. In conclusion, I would say women empowerment in the legal profession is just not a noble aspiration. It's a fundamental necessity for the realization of justice and equality. I hope and expect that Lord Chief Justice, Honourable Judicial Officers and other dignitaries from the administration will take measures to create conducive circumstances for women who strive to play their role in society.
Let's not forget we still have a lot to be achieved. Let us continue to strive towards a future where every woman, regardless of background or circumstances, has opportunity to thrive and contribute meaningfully to the pursuit of justice. This is me, Insha Zargar, signing you off. Take care. Goodbye. Thank you so much, Insha Zargar. We are honored to have Deputy Commissioner Baramulla. Mr. Meena Sherpa sir with us. I humbly request him to share his insights and specific. Honourable Chief Justice Jammu Kashmir and Ladakh High Court, Justice and kotiswar Singh sir, Honourable Principal Secretary to the Honourable Chief Justice M.K. Sharma sahab, Honourable Principal District Sessions Judge Mohammad Ashraf Malik sahab, all the dignitaries on the dais, senior judicial members of the J&K High Court, the Baramulla Court, the esteemed members of the Bar of Baramulla Court, all the panelists, esteemed delegates, and all the friends on the media. Good morning and hearty welcome to this conference by the Safe Youth Safe Federation. All the esteemed panelists and the esteemed members of the bar have already highlighted a lot of important things before me. For the paucity of time, I will not go into that. मैं बस 3 important मुद्दों पे आपके सामने कुछ statistics और data रखना चाहूँगा. जो सबसे important चीज़ मुझे लगता है towards empowerment of women is access to education. Just to cover the access to education, I would like to highlight that the government in the past so many decades has put a special emphasis to ensure that participation of women in education, whether it is access, quality and also amenities. अगर आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट की मेन फोकस रही है कि एक जितने भी हमारी यंग स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, वो स्कूल पे आएं, स्कूल में उनके लिए जो जितने भी फैसिलिटीज हो, क्लासरूम्स हो, सेपरेट वॉशरूम्स हो, अगर हम देखें समग्र शिक्षा अभियान या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, क्योंकि जब तक हमारे पास पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन स्टूडेंट्स इज नॉट इक्वल टू द पार्टिसिपेशन ऑफ मेल स्टूडेंट्स, वो नहीं होगी, तब तक हमारे पास जो हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की या एक्सेस और पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी, हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे. सर, योर लॉर्डशिप, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू टेल यू दैट the numbers of women students, especially now coming up for enrollment in Baramulla, is almost equal to the number of enrollment of boy students. Sir, second issue which I would like to mention again, which is again linked to the first issue, is the issue of economic empowerment, जो हम कहते हैं financial freedom for women. Your Lordship, I would like to brief you that today in district Baramulla alone, we have 74,000 women who are associated with various SSGs with the JK Rural Livelihood Mission. Sir, with these 74,000 women SSG members who are in more than 8,000 groups, they are involved in various activities, whether it is agriculture, horticulture, skill development, carpet weaving, shawl weaving, different livelihood activities. I would also like to brief your Lordship that in the previous 2-3 VVIP visits to the UT of Jammu and Kashmir, all the beneficiaries which were chosen from district Baramulla were women and they belong to this SSG category. I am extremely happy that my entire team is working towards this aim to ensure that women in the district have that economic freedom so that they are able to access and also be part of the society. Sir, as my role as District Election Officer Baramulla, it will not be out of place to mention that District Baramulla has a women electors which is higher than the national average. Sir, आज के दिन में सर हमारे पास after special summary revision of 2024, in comparison with the male voters, sir, for every 1,000 male voters we have 984 female voters, which is one of the highest in the country, sir. Last but not the least, as district election officer, जितनी भी आज यहाँ पे महिलाएं आई, स्पेशली मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सबको पता है कि आगामी जो हमारे जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा है, the last and most important thing which I think was not covered by the speakers before me is for empowerment of women. The most important tool is political participation. मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि कमिंग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें एंड ऑल्सो एक्सरसाइज योर वोट योर राइट टू फ्रेंचाइज. इसी के साथ मैं वजाहत साहब प्रेसिडेंट SYSF को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे आज ये कॉन्फ्रेंस रखा एंड ऑल दी पार्टिसिपेंट्स फॉर मेकिंग इट हियर. थैंक यू. Thank you so very much, Mr. Sherpa sir.
for highlighting the important fact that half of the empowerment of the women is political empowerment. That's through participation in political process and being the part of political process. Recognition and admiration is important in our society. If we are doing something good, recognition is important. So, begin with the felicitation ceremony. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm invitation to our esteemed chief guest, Shri N. Kotiswar Singh sir, to grace the stage and honor our distinguished dignitaries and women achievers on behalf of Save Youth, Save Future Foundation. First of all, I would like to call Mr. Mohammad Ashraf Malik sir, Chairman DALSA, Baramulla. Mr. Mehna Sherpa sir, DC, Baramulla. Mr. Iqbal Ahmed Akhund sir, Secretary DALSA. Mr. Iqbal Akhund, Secretary DALSA. Now I request women achievers to come forward on stage. First of all, I would like to call Ms. Nilofar Masood, first female president of Bar Association, Baramulla. Rashid, entrepreneur from Sopur. Ms. Asman Chan, working as corporate designer and is running a unit at TK Bala Block, Singhpura, and she is also running a footwear manufacturing unit. Please. I would like to call Shahida Banu along with her mentor and teacher, Ms. Riyazuna Kanai, who supported and guided her throughout the journey. She is among the 3 students selected for the prestigious Japan-Asia exchange program in science. Honourable Chief Guest to present the award of appreciation to functionaries of Save Youth, Save Future for organizing this great event. From Save Youth, Save Future, I would like to call Bajaj Farod Bhatt, Chairman Save Youth, Save Future. And Anika Nazri, Women's Wing Head, Save Youth, Save Future, that's me. To all the participants who received this wonderful honor from. Now is the moment we have been waiting for. It is with great honor that I invite our chief guest, Honourable the Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh, Mr. N. Kotiswar Singh sir, to share his insights and wisdom with us and bless the campaign with his golden words. Please give a huge round of applause.
आज काफी खुशी की दिन है। आप सबको यहाँ पे उपस्थित सब लोगों को मेरा नवरोज का विश करता हूँ आप लोग को। It has been a wonderful day to see so many people and also listen to wonderful ideas. आज के इस सभा में उपस्थित डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज के बारामूला के डिप्टी कमिश्नर श्री मिंगा शेरपा और बारामूला के स्पेशल ऑपरेशन एसपी ऑपरेशन श्री फिरोज जी और इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल है वजाहत फारूक जी का, एनजीओ सेव यूथ सेव फ्यूचर और बाकी सब यहाँ पे उपस्थित जुडिशरी के मेंबर्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स, एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे। अभी और अच्छा लगा मुझे कि आपसे मिलके बहुत सारे कश्मीर के वीमेन वर शाइनिंग इन देयर फील्ड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मैं आया था लास्ट ईयर तो इसी टाइम में तो मुझे कहा गया कि ये आज नवरोज का छुट्टी है। मैं वैसे नवरोज को मैं एक फारसी का एक फेस्टिवल समझता हूं। उनका न्यू ईयर है, मैं जानता हूं, मैं अपना बहुत दोस्त है बॉम्बे में। तो मैंने फोन किया उसको, उनका नाम है जमशेद। अरे जमशेद जी, आपका छुट्टी है क्या? बताओ क्या बात है, आज कश्मीर में छुट्टी है, आइए मनाते हैं। मैंने पूछा, देन आई आस्क्ड कि इन कश्मीर में व्हाई दिस नवरोज हॉलीडे? आई वॉज टोल्ड बाय माई रजिस्ट्री कि यहाँ पे चलता है हर साल, परहैप्स बिकॉज ऑफ इस्लामिक इन्फ्लुएंस शिया का। But I was not very convinced. There must be some other reason. So I did a little bit of reading on why Navroz is celebrated. In fact, मैंने देखा कि ये this is a tradition. Actually, Navroz is a Persian. जो आप जानते हैं, before Islam came in Iran and these parts of that Persian empire, तो Zoroastrianism चलता था, and that is a very important festival. But at the same time, very interestingly, जो the Navroz जो फेस्टिवल है अभी भी ईरान में is celebrated in a much with fanfare. In fact, to the extent that the government takes it very seriously. It's a culture actually, not so much related with religion. And somehow this उस टाइम का जो इन्फ्लुएंस है, कल्चरल इन्फ्लुएंस हो, कश्मीर में भी आया हुआ लगता है. That's why I am told यहाँ पे नवरोज the Kashmiri Pandits also celebrate very. So they call this Navre.
in Kashmiri perhaps nowadays, which is a new deal. And I am also told that these Kashmiri Kashmiri Pandits, Pandits, they offer certain items on that day. जो persons है, they used to offer 7-8 items. They lay down on the table. यहाँ पे भी यही करते हैं. So there's some kind of culture which has been going on. And ये भी मुझे बताया गया है कि it is nothing to do with Iranian Shia community also. It is also celebrated among the Sunni communities. चाइनीज का टर्किक उइगर है, सुन्नी कम्युनिटी है, कुर्दिश सुन्नी मुस्लिम भी ये नवरोज सेलिब्रेट करते हैं. What I am trying to say is that these are all cultural heritage. I mean, the Kashmir, it's linked with the Central Asia and also with the rich kind of historical bonding Kashmir has. हम ये भी जानते हैं कि this is also part of what I heard of this Kashmiriyat, this whole ethos of Kashmiriyat. It has nothing to do with religion as such. It is a practice, the culture which has evolved in this particular place, Kashmir, through years. In fact, when I read little bit of Kashmir history also, it is a cradle of civilization. यहाँ पे, and it was a very, यहाँ पे a rich tradition, literary tradition है यहाँ पे. Kashmir, we normally see from modern eyes, we see that Kashmir we identify with Islam. Well, Islam is very much part of Kashmir. Nobody can doubt about it. But its history, its tradition goes much beyond that. And which has shaped this society. That is why we see this Sufism also. I mean, as a student of history, I had read a lot of Kashmir about, but I heard so much about the Sufi culture here, and whenever I get an advantage or opportunity, I try to go to these dargahs. I have been to most of these important dargahs. This is a different feeling. You don't go as a kind of person belonging to a particular religion. When you go there, you see the sense of spirituality. अंदर में जब जाते हैं, वहाँ पे सब community आते हैं, देखते हैं. So that is kind of Kashmir. I have always felt it when I hear, which is because of that, the tolerance which this society has developed in course of these years, thousands of and hundreds of years. Infusion of various thoughts, ideologies, practices, ideas, cultures. It's really a melting point of different, यहाँ पे भी Hinduism was cradle of Hinduism, Sharda पे देखे हैं, one of the most ancient center of education. Buddhism भी है, flourished here. Islam also has flourished, but not by obliterating each other, one another, but by assimilating. That is what I feel today the Kashmiris. So I was very happy that this, even the Safe Future, Save Kashmir, Safe Youth, and also has done a lot of works in Sufism. I don't want to go much in detail about Sufism, जानते हैं आप लोग, लेकिन ये है कि this has contributed so much to the culture. In fact, I was listening to a YouTube, the famous Kashmiri Sufi singer, Muhammad Noor Muhammad. देखिए इनका आवाज में कितना बुलंद है.
It comes out so naturally. जब कोई गाना गाता है हम देखते हैं उसका जो वॉइस है ना कोशिश कर रहे हैं कि हाई पिच, लेकिन आप नूर मोहम्मद के गान सुनिए, इट कम्स जस्ट लाइक ए स्लो, लाइक ए झेलम रिवर जैसे बह रहा है, लाइक ए स्मूथ, so sonorous, and so much of, and he's, I think that kind of Sufi, you can see that, the kind of, he's trying to merge with the inner self. The whole Sufism का जो है, concept जो है, they're trying to, आप अपने आप को, जो अपने दुनिया में है, लेकिन you're trying to find the world, trying to find the, within yourself, the divinity within yourself, and you are part of it. You get mingled with divinity. That's the whole ethos of Sufism. So I see that, unfortunately, but because of certain disturbances, which has plagued this beautiful place, there has been a disturbance. I can always appeal to the people here to bring that real Kashmiriyat. It's a very, I've been to many of the states. Kashmir is unique. I'm not trying to say this because to please you here, because I'm speaking here. इसका अपना culture है, very, and it's rooted to very deep past. See, everybody talks of Kashmir tourism, beautiful place, but apart from that, it's not only tourism is what? Tourism is not only the place also, but the people who inhabit and also welcome the people. मैंने बहुत कम जगह देखा है कि वहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं और लोगों के साथ तो थोड़ा कोई तनाव है, उस तरह कुछ नहीं है. I have seen wherever I have been, the local people have been always welcoming. Yes, there are also people who are involved in tourism. They also want to make money. Taxi drivers हैं, hoteliers हैं, restaurant हैं, but they don't make you feel that you are an outsider. They always give you the feeling of, hospitality. And this is, you can't make it artificial. You can't be very artificial. You can't be a good human being, unless you are yourself very innately good. You can't pretend to be good. But goodness is something which comes out from within. Again I said, this is because of the rich culture the place has. And full of potential. Kashmir can sign perhaps one of the best states in the country. We know the Gujarat, Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu, they are quite progress in many fields, especially in a modern technology. Industrialization has taken place in many of these states. But Kashmir also has a potential, a huge potential, not only confined to tourism or apple industry or handicrafts. It has a, because I have seen last time when I visited the Kashmir University, I was very happy because we are talking a lot of women empowerment also. I think out of about 70, about 30, 40 were girl students who were given this recognition. Gold medalists and others, achievers. Wonderful. It has a potential. But how do we realize that? It is not a very easy solution. As many speakers have spoken, yes, giving इनका सम्मान करना, इज्जत है, it's very important. First of all, that, see, giving the dignity to women, it's very important. Then of course, when I was looking also the some figures, literacy figure में, especially women in the rural areas come है. This is one challenge we have to impress upon. I am very happy to learn, as Mr. Sherpaji has just mentioned, that there is a large increase in the
number of students, girl students. Actually, see, men and women, they think differently. You will see that in recent election aa rahe hain, you must have seen a lot of advertisement, kaise how trying to woo the electorates. But there is a concerted attempt to woo the women electorate. See, men generally cast their vote based on emotions. They write this, that. I don't want to go into it. All political issues and emotional issues. Women, they don't vote on that. It's how to make this life more comfortable, more practical, realistic. That's why every party, political party, is trying to woo the women voters in a different manner. Because they think differently, they're more realistic. They're emotional, but then when it comes to actual requirement of life, they're more practical. In fact, it is also one correlation. मैं देख रहा था कि what are the challenges now in Kashmir today faces as an outsider, as a judge. As mentioned, also crime against women is increasing. It's a very, very kind of disturbing trend. Recently, mostly, domestic violence increase हो रहा है. And there is a correlation with the drug issues also. आप जानते हैं, there are two centers of drug problems. एक तो golden triangle, एक है golden crescent. I come from Manipur, which is very near to golden triangle. Golden triangle है वहाँ पे Thailand, Laos, and perhaps Burma also. These are the three countries predominantly engaged in this drug, poppy cultivation and making of drugs. And वहाँ से सारे जाते हैं to the west. And Manipur is also one of the routes through which these drugs are exported to, taken, brought to many parts of the country as well as to other outside world. Because Manipur has a good connectivity. वहाँ से flights है, very frequently जाते हैं. So it's very easy and accessible place. And I have seen in 80s, Manipur was afflicted with this drug problem. Almost every household was affected. And the same, when I read these cases, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ कोई भी about the drug issue, the same problem. एक drug addiction हो जाता है, फिर क्या होता है? He will initially ask money from the parents कि मामा पापा थोड़ा पैसे चाहिए, चाहे वह खर्चा. The parents would, as usual, oblige their children 5 रुपया 10 रुपया. लेकिन every day he'll be asking, then बोलेगा पैसे नहीं है, जा. फिर क्या करेंगे? He'll quietly go to and take out the money from his father's or mother's purse. एक शुरुआत होते हैं ऐसे करके. Then it is discovered, then the parents, they conceal their purse. Once they conceal their purse, then you take something from the home, sell it. तो एक इस तरह के habit बन जाता है. It's difficult, and they clear the house. Because he sold, because the drug, see, it's costly. Initially, they will give you free of cost. That's how it starts. सबको ये फ्रेंड सर्कल होते हैं, इनका लोकेलिटी होता है कि ले लो, अच्छा है, मजा आता है, अच्छी बात है. And they get hooked to it, and they can't come out of it, and they indulge in this अपना घर का चोरी करना. बाहर के लोग आके चोरी नहीं करते हैं, घर का खुद ही रहने वाले घर का सामान चोरी. हम सोचते हैं कि चोरी हो गया, वो आया था बाहर से, वो यू ऑलवेज कास्ट आउट करते हो बाहर कि हम क्यों सोचते हैं कि आप घर का चीज घर वाले खुद कैसे चोरी करेंगे. But that's how this whole phenomenon starts. Then he gets more serious. Then खाने नहीं, because it requires a bigger dose. Then they use this injection with a more powerful. Injection लगाते हैं. Then
then they share these injections. उससे क्या होता है? Then they transmit these other disease. So Manipur was at one point of time the highest kind of rate of HIV, because they would not use syringe use करते हैं, they never use it sterile करते नहीं है, बस एक करके really then somebody gets infected, उससे शुरू हो जाता है. I don't know what is the rate of HIV in J&K. Is it very high? May not be, because not very high, thankfully. But वहाँ पे the rampant, not because of any sexual relationship, but because of use of sharing of series, infected hepatitis, whatever, all this. So these are issues. Then what happens? ठीक है, and don't think that it affects only the men. लड़की भी इसमें आ रहा है, because that's a very disturbing thing which I was reading. The number of addiction among women has also increased. But उनका again the stories are different. The root cause is क्या होता है? They become victim of domestic violence, of which so much things have been spoken also. They become a victim of domestic violence to come out of it. Some people again, because there is a very increasing number of women who are addicted to this drug. There is a big challenge before the society. Now there is a relationship, because a man शादी कर लेता है, when he grows up also शादी कर लेता है, but then to tell the other girl side कि I am drug addict. Then once he discovered, then क्या हुआ? Then this difference comes up, separation हो जाता है, divorce हो जाता है. And for a woman to get divorced because it is wrong, it's a shattering kind of life-shattering experience. Depression में चले जाता है. She is not welcome in the house, she is not welcome in her own house. Then she wants to escape this problem by this drug. So these are some of these. I am not saying this is the only way, but there are various reasons for it. But the fact remains that in today's Kashmir, it's a big problem, because Kashmir is very near this crescent, golden crescent, Afghanistan, Pakistan, and this Turkey, I think. What are the three? यहाँ पे China, Bangladesh, no, Balochistan. यहाँ पे गोल्डन क्वेश्चन जो है ना, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, म्यांमार तो गोल्डन ट्रायंगल हो गया ना, उस साइड में दूर है. तो ये जो है, बिकॉज वेरी नियर तो पाकिस्तान से आता है, बिकॉज ये थोड़ी ऐसा होता है कि यार इंडिया से कोई गया, कश्मीरी कोई गया वहाँ पाकिस्तान में गया और अफगानिस्तान में गया ड्रग लाने, कोई नहीं जाता, वहाँ से लेके आता है. But we are also privy to it. We allow the drugs to be imported and we are ourselves distributing it. ये थोड़ी होगा कि यहाँ पे ड्रग जो वो सेल करे कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान या कोई चाइनीज हो, कोई नहीं होगा. ये हमारे खुद के मुल्क के आदमी है. It's a big challenge. If we cease to be that drug dealers, distributors ourselves, to a great extent we can. In fact, today मैं देख रहा था मेरा हमारा वेबसाइट में आज का दिन में 9,923 केसेस NDPS केसेस है. देखिए 9,000 से ऑलमोस्ट करीबन 10,000 केसेस है NDPS पेंडिंग में. वो तो उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है और चार्जशीट किया है, कोर्ट में आ गया, और बहुत सारे केस अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. FIR पुलिस कोशिश कर रहा है कहाँ से आ रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है. बहुत सारे केसेस भी है. तो मान तो देखिए तो 10 क्या 20,000 हो गए केसेस. और मुझे ये भी बताया गया कि देयर अबाउट a lakh वर ऑफिशियल फिगर तो हमेशा कम होता है, अनऑफिशियल फिगर जो है अबाउट a lakh people were hooked in drug. It's a big challenge. So that's why I was saying that because it has a correlation, इससे वजह से हमारा एक डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है. अभी एज ऑन टुडे J&K में हमारा 12,954 डोमेस्टिक वायलेंस केसेस पेंडिंग है. I mean these are very, kind of worrying trends. We have to realize, because how do we progress? First of all, we have to understand and acknowledge the challenges before us. हमारा क्या problem है? Then
हम लोग उस चैलेंज को, प्रॉब्लम को हल करने का हम सोच सकते हैं. So these are big challenges before us, and here the youngsters have to always be the most important. I am very happy that ये जो NGO है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं to mobilize the young people, make them understand, and also to make other rest of the people understand the various problems. इसमें I am also very happy that यहाँ पे लीगल सर्विस अथॉरिटी हमारे इसके साथ कोलैबोरेट करके ये फंक्शन कर रहे हैं. एंड लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, ये जो है सिर्फ कोर्ट का मुकदमा के लिए नहीं है. इट इज टू स्प्रेड अवेयरनेस. हमें पता ही नहीं है हमारा हक क्या है. बुजुर्ग का, ओल्ड एल्डर पीपल का क्या हक है, वी डोंट नो. वीमेन का क्या हक है, चिल्ड्रन का क्या हक है, ये सब ये अवेयरनेस जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अनलेस यू आर अवेयर ऑफ योरसेल्फ, your own rights, your own responsibilities, your own duties, how do we contribute in the society? तो इसके लिए then what do you say with the awareness? एक structure होना चाहिए ना. आप जैसे you are all, I understand you are very religious, आप पढ़ते हैं religious book very religiously पढ़ते हैं. That's how you try to lead your life as a ideal life in the society. Similarly लीगल भी एक जो आइन जो है उसको भी जानना भी जरूरी है. तो क्या जानेंगे? व्हाट इज दैट व्हिच आर ट्राइंग टू लर्न? दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच इज द फ्रेमवर्क, द बेसिक लीगल फ्रेमवर्क. वी मस्ट नो दैट क्या है, व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये बहुत जरूरी है. पहले बिफोर इट वाज देयर वाज एब्रोगेशन. जम्मू कश्मीर का भी कॉन्स्टिट्यूशन था, बट मैंने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स of this constitution are more or less, and especially fundamental rights हैं आपके, then duties जो है, then how the state structure कैसे करेंगे, बहुत similar है. So there is not much of a difference. So we must know what is the legal framework. उसके because of which इसके लिए बहुत जरूरी है to relate our activities with this legal service authority, where we have lawyers. We have seen some of the very wonderful lawyers, especially from the girl lawyer and the lady lawyers also. They are doing wonderful work. I know. In fact, मुझे बताया कि नीलोफर जी आए थे मिलने, the first president of the bar, lady president of the bar. But I think not only in Kashmir, perhaps in India also. I have not heard also. Maybe in the world also. Because मैंने कभी सुना नहीं किसी में कि this is the president of the bar of so and so. कि कोई स्टेट में मैंने कभी देखा नहीं है. इनफैक्ट आई ऑलवेज से हमारा बार काउंसिल मीटिंग रहता है. बार काउंसिल मीटिंग में मेंबर्स यू आर 50% ऑलमोस्ट नाउ काफ़ी आ रहा है. मे बी 20% ऑफ द लॉयर्स आर फीमेल, लेडी लॉयर्स. मतलब कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. देयर वाज अ एनुअल कॉन्फ्रेंस इन गुवाहाटी. आई सेड I was asking this president of the bar council, then आपके है कोई फीमेल रिप्रेजेंटेटिव इसमें? It's a matter of concern that the bar council, which is supposed to look after the affairs of the bar all over the country, doesn't have a single woman. How can it be? So I'm very happy that Nilofarji is there. I'm sure we will look into various issues which especially come and are related to women. And of course, empowerment, जब बहुत सारे बातें हुई हैं. Yes, empowerment is again a very multi-dimensional. एक तो representation भी बहुत जरूरी है, because decision making process में unless representation is there, how to decide? Very important 73rd amendment है constitution में, when 1/3 of the elected members have to be women. It's a very important step, because they are going to decide how we are going to lead our lives. Now, if there is no women, only men are deciding. So there is a kind of the distortion in our policies. Because हमारे policies है तो men centric हो जाता है. And if it is relating to women, then it's kind of some kind of patronizing with that kind of attitude आ जाता है. वो women के लिए तो वही है. तो जब भी मैं देखता हूँ, अच्छा कोई function होता है, तो जितने सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में वो गार्डन लेना, वो करना, सारी लड़कियाँ करते हैं. Why not men can do it?
well, is it only the role of women lawyers? Then मैं देखता हूँ organization करते हैं, लड़कियाँ हुई चाय के लिए लड़कियाँ देंगे. This is, I said no. So in fact, when I went to visit in Assam, when I was judge there, तो function हुआ था, एक लड़की आई उसने चाय दी, मैंने कहा who are you? मैंने कहा judge. अरे तुम जज हो, तुम चाय दे रहे हो मुझे? अरे you should be sitting with us. किसने बोला करने के लिए? डिसीजन ने बोला. और किसको नहीं मिला? What about कोई मेल नहीं है? There is no other male judge here. Only they found you the girl there, तो उसको आप बोल दिए चाय दे रहे हो. Mindset has to change. This has to go down to every. हम जब कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि charity begins at home. Therefore, this idea has to start from our own. अपना ऑफिस में भी करना. We have to do that. In fact, I mean telling you also. I was looking for registry. मैंने फारूक साहब कहा भी कोई please give me some judicial officers, female, lady judicial officers. I don't see any there, perhaps. See, and in Jammu also I brought in two also. Otherwise it was all male registry. As if, but then, abhi kya hai? If you see the composition of judicial service, I think about 40% are ladies, I think. Kashmir mein, na? In recent years. In recent years. It was not earlier. It was not earlier. Now, and yesterday I went to when अभी शुरू हो गया इंटरव्यू शुरू हो गया आप जानते हैं ना तो I just went to the Public Service Commission में about 11 थे who were called for interview उसमें 5 तो लड़कियां ही थी यहाँ से भी अनंतनाग से भी एक थी शायद बारामूला अनंतनाग और there were 2-3 girls from Kashmir division also. See, and girls are coming up. And in the last selection I made when I was in Guwahati, out of 60, we recruited about 40 were girls, just imagine. And we were thinking also, like, क्या करें? उनको लड़कियां तो आएंगे फिर शादी करेंगे, बच्चे भी होगा, मैटरनिटी लीव भी होगा. We are just discussing among ourselves, हैं? तो छुट्टी लेंगे, तो कोर्ट कैसे चलेगा? ठीक है वो अच्छी बात है लेकिन they are more meritorious so we can't on that ground we cannot stop recruiting है ना so this I mean things are changing now there is it's a kind of now these are areas where practically a lot of women judges who are being appointed in the district judiciary but again in the high court again there is an imbalance again उतना नहीं है the high court में आप देखते हैं if there are 10 judges, 7 has to be appointed from the bar and 3 from the bench. So bar it is not that, so I'm saying why women are not coming in the bar. There is a challenge again because again it's a bar is still a male dominated profession. Women have this disadvantage. एक तो घर का भी देखना पड़ता है. You have to prepare for your home before you prepare for your own case. So that is which a man lawyer does not have to face. So these are areas of challenges in the profession, legal profession also. Judicial profession में luckily because women are doing better, अच्छे कर रहे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, they are coming in a large numbers. I am sure in due course there will be better representation. Which is in fact see, Supreme Court में the first time a women judge was appointed from where? आप किसी को पता है? Who was the first female judge in Supreme Court? Fatima Bibi. And which year? 91. See, देखिए अब हम लोग चल रहे थे Supreme Court 1951 से चल रहा है. देखिए, all male judges. So these are areas also. I mean, of course, I mean equality doesn't mean that 50-50 होना चाहिए because it has to be based on your capability, your, but then unless we give the opportunity, see, empowerment also means opportunity. See, unless there is an opportunity, how do you elect, I can't just appoint some lady judge as a high court judge. Because she has to practice, she has to establish herself in the field. तो क्यों नहीं हो रहा? But that opportunity is not there. So that unless we create that opportunity, how do we create that opportunity? Again, the social issues also. They are all interconnected.
Nothing is so clear, black and white में नहीं है. But at the same time, unless we change the mindset, जनाब advocate साहब ने जो कहा है, कि unless we change the mindset, that has to start, among men first. Women, they are already willing, but then they are not being allowed. So men has to start with this mindset, change the mindset, not the women. So these are some issues which I thought I will share. Basically, there are so many things to be discussed, but unfortunately, time running out. बहुत सारे issues हैं. I would say that first of all, we must identify the problems right now which Kashmir is facing. I see this NDPS, drug addiction, is a very big issue. It can spoil the society, I can tell you. It can, isko pura nas, not only the families are destroyed, because a man, he becomes drug addict. If he's a father, then what happens? His wife suffers. There is all possibility of that divorce. Then he also sets a wrong precedent for the example for the children, because he doesn't have time to look after, because all the time he's looking after drug and money. No contribution, no positive. I can tell you, any person who is addicted to drug has all the potential goes down the drain. कोई positive contribution नहीं होता, सिर्फ negative होता है. And it has a very devastating effect on the family immediately. Then society धीरे-धीरे होता है. It's a big problem. This is something I would like to take up with right earnest, and also I have been requesting the Legal Service Authority to organize more awareness program. How to prevent this? How to prevent this drug abuse? ये बहुत सारे serious issues हैं. And of course, this domestic violence. This is something I consider this to be very important, two issues. मैं गया था last time when I went to Badgam, legal service था ना, so I met this girl who was sitting there. मैंने क्या problem आपका? That मेरा maintenance नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा? Because her father had, I think the death of her mother, that her father married a second time, and that the second wife, the stepmother, control everything, and she doesn't give any money to her. And she's quite, she was MA par rahi thi shayad, mujhe bataya tha. She was doing post, and she's totally devastated. And she's running from pillar to post. And we said to go to court. There is a saying in Bengal, if you want to curse somebody, आप कहते हैं जब गुस्सा आता है तुम you go to hell, बोलते हैं ना, गुस्सा आता है तो बोलते हैं वहां पे एक है, जब कर्स करना है तो बोलो तुम मुकदमे में फंस जाओ. आफ्टर दैट विल नॉट बी एबल टू कम आउट. तुम्हारा पैसा, तुम्हारा टाइम सारे खींच लेगा. दिस इज द लीगल सिस्टम, which of course we are all trying our best to make it much more human, much more people friendly, much more litigant friendly. But ये system है. I am a judge, I have been a lawyer, but I do not want to fight any case myself. I don't want to file a case also. I don't want to defend anything relating to my own problem. Because this system is not very, very responsive. It's very costly. And you can't blame the lawyers and judges also, because how things are there, that is another issue. What I'm trying to say is that, yes, these are the challenges all of us must try to understand and see what we can do, and for which the youngsters have to take a very lead role. They are the torch bearers. And I'm very happy that this NGO has taken this very important role, trying to bring, and they have to be, because ultimately, unless we change the mindset, especially of the youngsters, because अब जो बूढ़े हो गए तो you can't help it, you can't do anything much about it. But that this formative stage जो है youngsters के जो है, it is very important that we go to the right direction and also try to be changers of the society, not only change ourselves but to bring change in ourselves. So thank you very much for giving me this time to listen to me, and I congratulate the organizers here, especially Wajahat. I am very happy. That's why I came. मैं जम्मू में था, मैंने कहा चलिए मैं जाता हूँ कश्मीर में. I came yesterday to attend this function. I'm very happy. I was very impressed. I told my colleagues also, मुझे जाना है Srinagar. I have a commitment, so I'm coming here.
and I'm told that there will be another 2-3. I will try to organize. See, giving just lectures is good. I mean, to have this kind of interaction, but it's important to go down to the people, the communities, the localities, the schools, the colleges, to bring this message that first of all that these are the problem, and we say that because we have this potential. I can tell you because Kashmir has a huge potential. Don't miss it, because we have a very rich tradition, I tell you. And I have found you very, very also intelligent. ऐसी बात नहीं है. यहाँ के लोग average, are very good. Education also very good. Of course, there's थोड़ा कम है in rural areas, which I found at national levels है थोड़ा कम है. It should be increased. I'm very happy also that when we celebrated this the Women International Women's Day, I found so many women. I mean, see, employment is not only sarkari, jobs, no. Self-employed also. हम कहते हैं कि आप क्या काम करते हो? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ. वधु में कुछ नहीं करता. But then I found that she is doing a lot of घर का काम. In fact, today in today's legal, now there is a change in जैसे घर का काम. Is also a काम. मैं कभी-कभी बोलता हूँ. ऐसे तुम्हारे घर में कौन आता है? My wife. She is a householder. ठीक है, क्या करते नहीं? कुछ नहीं काम नहीं करते. वधु में कुछ नहीं काम करते हैं. रोटी कौन बनाता है? तुम्हारा ये घर का ये कपड़े कौन ये करता है, साफ करता है? घर का साफ कौन करता है? ऐसे करो, तुम्हारी बीवी को छोड़ दो छुट्टी में, एंड यू एंगेज ए हेल्पर, एंड हाउ मच द हेल्पर विल आस्क यू. एक दिन के लिए दे विल डिमांड इतने पैसे. सी वी टेंड टू इग्नोर, सो जो है ना घर का काम इज अ बिग काम. And I see that there are a lot of women entrepreneurs, who are doing. आपने यहाँ देखा मैंने, apart from the traditional जो आपका काम है, embroidery है, shawl making है, and carpet making. Apart from that, they're doing wonderful works. This dairy farm. Last time also that the one girl they were running a. I saw in that the Pradhan Mantri ji आए थे, there was interaction. There were 3 girls, huh? Carnival se hai na? They're running a dairy farm. I mean, these are wonderful works you can do, self-employment entrepreneurs, because there are lot of potential in this place. देखिए जब यहाँ पे अभी तो नहीं मिलता है. Whenever I go for this kind of meeting, I see a fruit juice, apple juice. वो टीन में आता है ना, तो देखते हैं वो कहाँ पे वो एप्पल जूस कहाँ बनता है? वो तमिलनाडु में. और नहीं जो एप्पल जूस है ना टीन का, तमिलनाडु में आता है. तमिलनाडु में कहाँ ऑरेंज होता है? यहाँ से ऑरेंज ले जाते हैं, वहां जाके देन दे मेक इट एंड दे आर मेकिंग प्रॉफिट. व्हाई कांट यू मेक हियर? कश्मीर क्यों नहीं बन सकता है दिस एप्पल जूस? व्हाई इट हैज टू गो टू ऑल द वे टू तमिलनाडु और सम अदर स्टेट्स? देयर आर लॉट ऑफ स्कोप, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, पोटेंशियल है इस जगह पे. आई थिंक दिस इज समथिंग विच दैट वी कैन डू. ऑफकोर्स देयर इज अ पीस, ऑफकोर्स ये तो है. If there is turbulence, वो नहीं होगा. That we have, because the turbulence has taken Kashmir back 30 years, I can tell you. Otherwise, नहीं होता. You would have been, perhaps this state would have been one of the foremost states in the country. एक तो economic development भी नहीं होता है. आपका मानसिक, in fact, I was told that यहाँ का जो mental health is a big issue, because almost every person has gone through this trauma. ये ट्रॉमा जो है ना, I mean I don't want to again go in detail, time नहीं है, but then this again, I mean brings slows down the social development. Unless you are happy person. अभी GDP कहते हैं ना, happiness index भी कहते हैं. जैसे Bhutan is one of the few countries in the world where they don't use the word GDP. They use the word human index, human happiness index. How people are happy, because see they have also very kind of disciplined life, in a very peaceful, disciplined kind of society. If you go to Bhutan, it's a very wonderful place. कोई tension नहीं है वहाँ पे. So the society also moves, there is a more peace, stability and progress in society. But if the people are inherently not happy because of the trauma which people have gone through, because of this turmoil people have gone through, I think this is something also which we must avoid. Again,
ये टर्मोइल अवॉइड करना चाहिए। जब तक ये टर्मोइल होगा, आपका ट्रॉमा होगा तो आपका डिप्रेशन होगा। दिस इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so very much, Honourable Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh. I would like to highlight 2 points जो सर ने कहे कि चेंज मेकर्स अगर हम हैं, that we can't do anything about our old generation and we are the younger generation, and if we are not able to be the barrier between that transportation of trauma जो हो रहा है from generation to generation, अगर हम उसमें barrier की तरह काम नहीं कर रहे हैं तो we should not call ourselves change makers. Change makers वो है जो इसमें barrier बनते हैं और इस trauma को दूसरी generation में transfer होने से रोकते हैं. And second thing, sir was talking about the practice of जब females या चाय सामने रखती हैं या बाकी चीजें, sir we begin with our organization. आपने नहीं देखी होगी कोई यहाँ पे फीमेल जिन्होंने आपको सर्व किया. ऑल वर मेल्स एंड फीमेल्स वर सिटिंग एंड वॉचिंग होल गैदरिंग एंड ऑल द सेशंस. इट इज नॉट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट men, but we call it equality with equity. I now request Mr. Wajahat Farooq Bhatt to present the vote of thanks. Thank you, Anita. Thank you so much. Before vote of thanks, I just want to add one more thing here, sir. With your permission, sir. We have seen from last 3 decades in our Kashmir. First thing जो हमने face की, that was definitely violence, जिसकी वजह से हमारे 3 decades, 30 years waste हो गए, बर्बाद हो गए, जवानियां बर्बाद हो गई. And what I understand, जब मैंने बहुत सारे अपने इवेंट्स में, अपने प्रोग्राम्स में कुछ लोगों से बात की, एक चीज मैंने सर लैक जो मैंने देखा कि दैट वो लैक कर रही है, दैट वाज कि दैट जिंदगी से मोहब्बत. ये कंसेप्ट की जिंदगी से मोहब्बत काइंड ऑफ ये दिमाग में नहीं था लोगों के, हमारे नौजवानों में, बट ये था कि मौत से मोहब्बत करना. ये जिंदगी का कंसेप्ट सिखाया ही नहीं था किसी ने. So, same once again, Alhamdulillah, with the help of Almighty Allah and our administration, Jammu Kashmir Police, Security Force, our civil society, आज हम इस मकाम पे आ गए कि आज हमारी फीमेल्स, मेल पार्टिसिपेशन, जितनी भी डेजिग्नेशन जो आजकल मिलती है, हर एग्जाम्स में क्वालिफाई करती है. सो इट इज द टाइम एक ऐसा स्पेस आपको देना, एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पे इंसान बाहर निकले घर से, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, कोई एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वो उसको स्पेस मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए. वो नहीं था इससे पहले. सो आज वी हैव सीन फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, आज की कश्मीर को मैं खुद एज अ यूथ ऑफ कश्मीर मैं कहता हूं कि यही जन्नत है, जिस जन्नत के ख्वाब हम देखते थे, जहां पे मेल, फीमेल, मर्द, बुजुर्ग, हर तबके के लोग, उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, एक्सेस उनको हर जगह पे एक्सेस है. और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अवेयरनेस आई है कि जिंदगी से मोहब्बत, जिंदगी है क्या. सो विद दिस, ऑन बिहाफ ऑफ आवर सेव यूथ सेफ फाउंडेशन, हमने एक ही आवाज, हमारा एक ही स्लोगन है कि जिंदगी से मोहब्बत करो. जिंदगी से मोहब्बत करेंगे तो दुनिया पाकीज़ा बन जाएगी. इंसानियत, कश्मीरियत जो हमने स्लोगन लगाए हैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो जाएंगे हमारी कश्मीर में. सो विद दिस, ऑन बिहाफ ऑफ सेव यूथ सेफ फाउंडेशन, आई एक्सप्रेस सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू आवर एस्टीम्ड Chief Guest, the Honourable Chief Justice of High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, Justice and Kotishwar Sir, for gracing us with your presence. Your attendance underscores the importance of our collective efforts towards empowering women in our society. I also extend thanks to our distinguished guests, including Principal Secretary Mr. M.K. Sharma Sir, Mohammad Ashraf Malik Sir,
Chairman of the District Legal Service Authority, Baramulla, Shri Minga Sherpa sir, Deputy Commissioner of Baramulla, SP Operation Shri Firoz Ahmad Yaya sir, for joining us today. Special appreciation goes to our esteemed speakers, Advocate Nilofer Masood ji, Mr. Karamat Kuyum sir, Jian Ahsan sir, Ms. Siptan, Ms. Insha Zargar and Ms. Bushra Bedar for sharing their expertise and insights on women's empowerment, inspiring us to strive for a more inclusive society. I commend the efforts of District Legal Service Authority Baramulla, once again especially Chairman Shri Muhammad Ashraf Malik sir, Secretary Dalsa Mr. Iqbal Ahmad Akhund sir and their team for their guidance and support in making this event successful. Furthermore, heartfelt thanks to our team JIO Set Top Box Foundation, especially our women's wing head Anika Nazir, जो कि आज हमारे इवेंट में होस्ट भी थी, एंड मीडिया पार्टनर इस इवेंट के जो हमारे कंटिन्यूसली लाइव ये इवेंट चल रहा था, CEO ANN न्यूज मिस्टर तारिक भट्ट साहब and other team members of JIO Set Top Box Foundation for their dedication and hard work in organizing this event. Gratitude is also extended to all attendees and contributors, including members of journalism fraternity, for their support and contribution to this noble cause. In conclusion, let us remember, believe in her, for her belief holds the strength of our society's future. In the future, JIO Set Top Box Foundation will endeavor to organize more such events and provide a platform for people from diverse fields. Thank you for being part of today's event. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. फूड पैकेट्स फॉर आप सबके लिए इफ्तारी के लिए हमने फूड पैकेट्स लाए हैं. आप प्लीज यहाँ पे वेट करें, वो आपको सर्व किए जाएंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. Someone has rightly said, हम न होंगे कोई हमसा होगा. ये दुनिया यूं ही आबाद रहेगी, हम न होंगे कोई हमसा होगा. सो जो हमसा होगा उनके लिए हम एक रास्ता बना के रखें ताकि वो इस सोसाइटी में कुछ बेहतर कर सके. With this thought, I would like to say thanks to distinguished speakers for their enlightened addresses. Let's carry forward the spirit of belief and empowerment. Thank you for being the part of this event. Yaqeen, believe in her. Thank you so much.